डॉक्टर सुमैया स्टार्ट करें हम। सही आ रही है आपको? डॉक्टर तनवीर, आवाज आ रही है आपको मेरी सही? जी जी आ रही है आवाज़। जी, अच्छा। Bismillah. I am Dr. Saida Sumaya Gilani, and the focus of our today's talk will be C1 cervical spine fractures. So let's start our presentation with a brief look at what we have in today's presentation. We will start our presentation with a brief introduction, and then we will revise the surgical anatomy related to atlas fracture. We will also try to find out what possible mechanism lead to injury of the atlas, and we will take a look at certain classifications that are there for to classify atlas fracture. And then we will learn how to diagnose the atlas fracture on different type of radiological investigation. And in the end, we will try to find out how to manage the patient with atlas fracture. Okay, so first, the first cervical vertebra, that is also called atlas, actually comprises the craniocervical junction. It has two important joints in this region, the occipito-atlantal and atlanto-axial articulations. Therefore, providing 50% of the flexion and rotation in the cervical spine respectively. That is why the atlas is of immense importance in the cervical spine. Due to its high degree of motion, this bony segment often get injured in trauma setting. So the C1 fractures should always be promptly identified and treated in all patients, although they rarely require surgery. And in case any bony fracture of atlas, it merits a thorough examination of ligamentous injury between occiput and the atlas and axis, which in comparison often confers a poor prognosis. Okay, so we will start with the surgical anatomy. We will try to simplify the anatomy of the atlas. And the atlas is actually atypical vertebra, and it is unique in a way that it neither has a spinous process nor body. What happened that during early embryological period, the body of the atlas fuses with that of axis, and in early life it presents the dens. So the dens of the axis is actually the body of atlas. So the first anatomical landmark is the lateral masses, which are present bilaterally, and they actually serves as the body by bearing the weight of overlying globular occiput over it. So the lateral masses have the superior articular facet, which you can appreciate the the structure bluish in color. It is directed upward and medially, and these bilateral kidney-shaped concave structure actually articulate superiorly bilaterally with the occipital condyles, so forming a very important joint in the craniocervical region, that is the atlanto-occipital joint. Here you can see the articulation, which is present bilaterally around the foramina magnum, the atlanto-occipital joint. Next is the inferior articular facet, which are also present bilaterally, and they are directed downward, backward, and laterally. And they also contribute in the second articulation, and they articulate downward with the superior articular facet of the axial joint and form the atlantoaxial joint. So the two articulations here, you can see superiorly they at least form the atlanto-occipital joint, whereas inferiorly it forms the atlanto-axial joint. So providing the cervical spine a great degree of mobility. The next structure that we need to know is the transverse processes. Here you can see red in color, they are actually projected outward and laterally, and the transfer process of a cervical vertebra actually arises from the lateral masses. That is why they are directed more outward in comparison to the other cervical vertebrae. And this is the reason, one of the reason that the first cervical vertebral canal is more spacious and rounded in structure. The important foramina is present in the transverse process, that is the foramina transverse area, which you can appreciate here.
So its significance is that the vertebral artery actually passes through these foramina transverse areum bilaterally upward. So here you can see the supracervical vertebra is actually ring-like in structure. And as I have already told you that it neither have body nor the spinous process. So in spite of that, it has two arches, the anterior and the posterior arch, and which have tubercles. The important articulations of anterior arch is that here you can see that it on its internal surface, it has this oval facet, which is here to articulate with the dance of the axis vertebra. And from anterior arch to dance, we calculate the Atlanto dance index, which we will discuss later in the presentation. And talking about the posterior arch, there is also a very important anatomical landmark present over its superior surface. That is the groove for vertebral artery, which run on its superior surface. This illustration clearly demonstrates the course of the vertebral artery. Here you can see that it comes from downward, passes through the foramina transverse areum, and passes through the groove that is present superiorly on the posterior arch of atlas vertebra. And along with it, there is first cervical nerve, which accompanies it in the groove. So the most important anatomical structure that one must keep in mind during the anatomy of atlas is this vertebral artery. Then we have anterior tubercle that give attachment to the anterior longitudinal ligament. And along the surface of the anterior arch, it also give attachment to anterior atlanto-occipital membrane. Whereas the posterior tubercle, which you can see, gives attachment to the ligamentum nuchae and the membrane that is the posterior atlanto-occipital membrane. So that is all from the anatomy. We will discuss the transverse ligament later in the presentation. Okay, so let's try to find out what possibly lead to fracture of the atlas. Actually, the C1 fractures generally occur due to an axial loading mechanism, which is the main mechanism for its injury, which can be either combined with flexion, extension, or rotation to create the typical fracture patterns. The area is subjected to high stress from a large movement arm of the cranium. So basically, axial loading is a very severe blow to the top of the head. And hyperextension, hyperflexion, or rotation can also contribute to the fracture of atlas. This illustration cleared the concept of axial loading. Here you can see that there is severe blow or stress to the cranium, which ultimately put pressure on the cervical spine and cause fracture of the atlas. This is another illustration which shows how axial loading results in the fracture of atlas. Also, axial loading combined with rotation, flexion, and extension further aggravate the injury. Okay, so let's take a brief look at epidemiology. So the atlas fractures actually occur secondary to trauma in most of the cases, and out of which 80% are due to motor vehicle collisions. And they comprises up to 13% of all cervical fractures and 1 to 3% of all spinal injuries. But the thing is that out of all injuries in the craniocervical spine, up to 20% involve the atlas, so which is a very handsome percentage. So that is why they are important. And 50% cases in 50% cases, concomitant spinal fracture is present, and in 40% of the cases, they have association with axis fracture. So one must keep these two percentages in mind. So whenever a patient come to you and you suspect atlas fracture, you must rule out other spinal fractures and especially the fracture of underlying axis vertebra. So we have different type of classifications that are present for atlas fractures, but the most widely used are the two, the Landel's and the Jefferson's classification. Other are Levine and Gavelier classification. We will discuss all these classification one by one.
So according to Landels, he classified the atlas fracture into three types. The type 1, that is single arch fracture, either posterior or anterior, and they are usually stable fractures. Whereas in type 2, he classified the fracture involving the anterior as well as posterior arch, that is the burst fracture, and they comprise up to 51% of the atlas fractures. Whereas those fractures that involve the lateral mass are classified as type 3. So type 1 is a stable injury. It usually occurs at the junction of the R and the lateral mass. And Jefferson 1 and 2 are the same as the type 1 of the Landels. In type 2, there is burst fracture, and it is characterized by 4 fractures. 2 in the anterior arch, 2 in the posterior, but it can be so it involves the both arches. It is also divided into two types further by involvement of the transverse ligament. In case the transverse ligament is intact, then we will classify it as stable fracture. Whereas in case the transverse fracture is ruptured, then we will label the fracture as type 2 unstable fracture. Here you can see in the illustration the difference. In one illustration, the transverse ligament is intact, where in another picture, there is tear of the transverse ligament. So in type 3, usually occur on one side only, with the fracture line passing either through the articular surface or just anterior and posterior to the lateral mass on one side. It is classified as the Jefferson 4 fracture. So this is Jefferson classification. So according to Jefferson, we label the fracture of the atlas as type 1 in case it involved the posterior arch only, and type 2 if it involved the anterior arch. In type 3 Jefferson fracture, it is a type of burst fracture that involves both the anterior and the posterior arch. Whereas in type 4, the lateral mass fracture is involved. The next is the Levine classification. The Levine classified atlas fracture into 5 types. He called the fracture as type 1 if there is isolated bony transverse process fracture, and type 2 if there is isolated posterior arc fracture. Type 3 involved the anterior arc fracture, and in type 4 there is comminuted fracture or lateral mass fracture. Whereas in type 3 there is bilateral burst fracture, that is the typical Jefferson fracture. Whereas Gavilier also classify atlas fracture in type 5 types. Type 1 is when there is isolated anterior arch fracture. Type 2 when there is isolated predominantly bilateral posterior arc fracture. And type 3 if there is combined injury of anterior and posterior arc. Again, he divided them into stable and unstable depending on the involvement of transverse ligament. He classified lateral mass fracture as type 4 fractures and isolated transverse process fracture as type 5. Okay, so let's have a look how the patient will present to us in case of atlas fracture. The surprising thing about the good thing about C1 fracture is that neurological deficit is rare with isolated C1 fracture due to large canal diameter. As I've already discussed this in the anatomical section, that the diameter of a first cervical vertebra is more than in comparison to other cervical vertebrae. And in case there is fracture, the fragments displace outward rather than inward. So this is a positive point about this fracture. Patient can present to us with neck pain. Prevertebral swelling may impinge on esophagus and can cause swallowing difficulties. There can be pain in the distribution of the greater occipital nerve, and in case the vertebral artery dissection occur, then patient may produce symptoms like diplopia, altered level of consciousness, and lateral medullary syndrome. Okay, so we will evaluate the patient of the atlas fracture by either by extracervical spine,
and which we need three type of cut. That is the cervical spine X-ray lateral view, AP view, and open mouth view, which we will discuss later. CT is the diagnostic test of choice, and we will advise the patient thin cut high resolution CT scan. MRI is another modality of choice and may be used to evaluate the integrity of the ligaments present in the cervical region. Okay, so this is X-ray cervical spine lateral view, where you can appreciate the fracture of the first cervical vertebra. Okay, so we advise open mouth view X-ray cervical spine to rule out the cervical spine fracture and also to rule out the transverse ligament injury. Here we apply the rule of Spence, according to which if the lateral overhang bilaterally is more than 7 millimeter, then there is likely injury of the transverse ligament. Here you can see that normally when the transverse ligament is intact, this distance is not present here. When there is injury of transverse ligament, these fragments of the atlas displace laterally, creating a distance. If this lateral hangout is bilaterally combined is more than 7 mm or more, then we will label it as injury of transverse ligament. This is X-ray film, open mouth view, dense view. Here you can see that this is dense process, and these are the lateral masses of the first atlas vertebra and underlying axis vertebra. So there is lateral hangout of the atlas. This X-ray also shows the outward displacement of the fragments of atlas vertebra, and this is axis. So this is the way by method by which we can measure the lateral hangouts, and there is possibly indicate rupture of transverse ligament. Another method to rule out the transverse ligament injury is Atlanto-Dense index. Here you can see that this is anterior arch and this is dense. And normally what happens that the distance between these two structure is less than 3 mm. But whenever there is injury of the transverse ligament which is present here, it ruptures. So the dense displays towards the canal and this distance increase. So it indicates the transverse ligament injury. This is Atlanto-Dense interval, which is normally less than 3 mm. And normally there is a lot of space available for spinal cord. So in case the transverse ligament is injured, this dense will displace towards the canal. And that is why surgical intervention is needed in transverse ligament injury. Here you can see how to calculate the Atlanto-Dense index. So in this X-ray, you can appreciate that this is anterior arch and this is dense, so the distance has been increased. So these are the CT films, CT scan axial cuts showing the fracture of anterior arch and posterior arch. Okay, so how to treat the patient with atlas spine? Actually, what happened that most atlas fractures can be treated with immobilization in a rigid cervical arthrosis or a hollow vest. Isolated posterior arc fractures are stable injuries and they can be treated by immobilization in cervical collar for up to 8 to 12 weeks. And in case the non-displaced fracture, minimally displaced fracture can be treated by collar immobilization. Fracture in which lateral mass is displaced less than 7 mm, as we have discussed earlier, beyond the articular surface of the axis, then we will apply hollow traction for up to 3 to 6 weeks. And if the lateral mass hangover is the articular surface of the axis is greater than 7 mm, then a transverse ligament is likely to be ruptured. Causes C1, C2 instability. So transarticular C1, C2 fixation is the option.
to simplify the management of the atlas fracture, we will decide the management according to the type of injuries. This is according to the Landel's classification. So in case of type 1 injury, we have to do nothing. We just need to do rigid immobilization of the patient for up to 8 to 12 weeks, and that's it. Same is the case with type 3 fracture. We will do rigid immobilization for the same time period. But the management is a bit different in case of type 2 fractures. So if the fracture is stable, that is the transverse ligament is intact, then up to 10 to 12 weeks, rigid immobilization is indicated. And in case of unstable fracture, that is the transverse ligament injury has been occurred, then halo for 12 weeks or surgical stabilization and fusion are the options. Okay, so the surgical options that are present for atlas fracture are fusion options when surgery is indicated are two. That is, in case the unilateral ring on anterior C1 arc fracture is there, so we will go for C1 C2 fusion. But in case of multiple ring fractures or posterior C1 arc fracture, we will go for occipital cervical fusion. And the surgical options that are present and they do not involve orthodesis is the first one is the posterior C1 screw placement, and the second is the anterior transoral screw and plate placement. So these are the different collar and halo vest that are available for rigid immobilization of the cervical spine. Okay, so the stability and integrity of the transverse atlantal ligament is the most important determinant of stability in the C1 fractures. So the rupture of a transverse ligament actually results from a fall with blow from the back of the head. For ligamentous injury, non-operative treatment is ineffective in majority of the cases. So one must keep this thing in mind. Whenever the ligamentous injury is present in the atlas fracture, uh, the non-operating treatment is ineffective. Okay, so why the transverse ligament is so much important in this region? Here you can see that this is anterior arch, this is dens, and this is transverse ligament. So the function of the transverse ligament is to stabilize the atlantoaxial joint. So it keeps the dens in its position. In case this transverse ligament will rupture, the dens will displace backward and will result in atlantoaxial instability. So that is why we have to opt surgical options in case of transverse ligament. So the Dickman has classified the transverse ligament injury further into two types. In type 1, there is disruption of substance of the transverse ligament. Whereas if there is avulsion or from lateral mass, then we will classify it as type 2 injury. This illustration will simplify your concept. Here you can see that in type 1, there is avulsion of the substance of the ligament. Whereas in type 2, here you can see that this ligament has disrupted from its attachment through the lateral mass. This is another illustration showing the type 1 and type 2 of the transverse fracture. Okay, so the treatment is different for both types. The initial treatment consists of immobilization and through skull traction. In case there is type 1 injury of the transverse ligament, they are incapable of healing without internal fixation. Whereas type 2 injuries initially can be treated with rigid cervical orthosis for 3 to 4 months. So that is the difference. Who had a non-union and persistent instability, then posterior stabilization of C1, C2 complex with either Gilly type of posterior C1, C2 arthrosis or Brooks and Jennings fusion by bone block technique. Okay, so in Gilly fusion, a wire loop under the arc of the atlas are passed and the free end of the wire through the loop grasping the arc of C1. Place the corticocancellous graft against the lamina of C2 and arc of C1 beneath the wire. Here you can see that in Galley fusion, we fix the fracture by this way. Whereas in Brooke and Jennings type of fusion, insertion of wire under the atlas and axis
Full thickness rectangular iliac bone graft between the arc of atlas and each lamina of axis. The graft is secured in place by wire tightening over them. Here you can see the Brooke and Jennings type of fusion of the atlas fracture. Okay, so another topic is the rotatory subluxation of atlas on axis. In this case, the patient present with torticollis and restricted neck motion, and an open mouth odontoid radiograph may reveal the wing sign that is caused by overriding of the atlas over axis joint on one side and normal configuration on the another side. So Fielding and Hawkins has classified subluxation into four types. In type 1, there is just a simply rotatory subluxation without anterior shift. The odontoid act as a pivot. In type 2, there is rotatory displacement with anterior displacement also of up to 3 to 4 mm. In this case, the lateral articular process acts as a pivot. In type 3, there is rotatory displacement with anterior displacement, but this time the distance is greater than 5 mm. And in type 4, there is rotatory displacement with posterior displacement also. This is type 1, in which there is simple rotatory subluxation without anterior shift. In type 2, there is rotatory displacement with anterior displacement of 3 to 5 mm. In type 3, rotatory displacement with anterior displacement of greater than 5 mm. And in type 4, there is rotatory displacement with posterior displacement also. So the treatment option for this is that in case of acute rotatory subluxation of atlas over axis, it can be reduced by close reduction, that is immobilization in hollow vest for up to 8 to 12 weeks. If close reduction is not obtained, then open reduction by posterior approach can be done. And stabilization of atlas over axis complex by posterior cervical orthodesis using autogenous iliac bone grafting and oblique wiring. In this case, the hollow vest is recommended for up to 8 to 12 weeks. Finally, what is the overall outcome of the atlas fracture? Actually, in many series, treatment without surgery result in is satisfactory actually. Satisfactory radiographic outcome when the transverse atlantal ligament is not disrupted. Even, however, even with the satisfactory X-ray result, up to 20 to 40% of the patient have neck pain after rigid immobilization. And one of the late complications may include basilar invagination as a result of telescoping of odontoid through the splayed ring of C1 into the foramen magnum. Thank you so much. And that's all from today's presentation. Should English हो गई थी presentation में वो भी cover कर दूँ। It was आपको हमारी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर, आ रही है सर। Assalamu alaikum. It was a very good presentation. I think she has covered all the important things. So if anyone who wants to discuss, तो आप आए डिस्कस करें, कुछ चीज पूछनी है, कोई प्रेजेंटर से पूछ लें, कुछ चीज डिस्कस करना चाहे, जो चीज उसने नहीं बताई वो आप डिस्कस कर लें. It was a very good presentation on C1 fracture. जी. Sir, it was very nice presentation, and I would like to add some point that C1 and C2 vertebra are called atypical cervical vertebra, and C1 is important because it formed the giant atlanto-occipital giant, and due to that giant, we the ES moment when we flexion and extension moment especially take place at atlanto-occipital joint, and the no moment take place atlanto-axial joint. So it's very important, and when there is a fracture of the C1, so we should keep in mind there can be other cervical spine fracture in the 40 to 50% of patients. And
the C1 fracture, we should go for investigation, and the investigation, the open odontite view is very important, and we should see on the open mouth odontite view that there is a displacement of the C1 and C2. If it is more than 7 mm on both sides, so we should keep in mind that uh, there can be uh, TIL disruption. And other important thing that the uh, the open mouth odontite view, and other is the MRI, cervical spine, and the 3D CT. These are very important investigation. Then the treatment. Usually, we classify the fracture of the C1 into single arch. Uh, it may be the interior or posterior arch, or the Jefferson, that is multiple point fracture, and the lateral mass. But in the Jefferson, usually the patient have no neurology, uh, and the neurology is intact. So we should keep in mind the TIL. If there is a TIL disruption, so अरे बनाओ and it is if there is a TIL disruption, so we should keep in mind that we should go for the surgical option. But if the TIL disruption is anatomical and the TIL is disrupted, if it is physiological disruption, that is type 2, so we can go for the conservative management in the form of the Helovis, and then we go for the surgical option. And then important thing is the atlantodental interval. If it is more than 3, so there is the chances that TIL has disrupted, and the DINS has the DINS is compressing the neural structure. So in that case, we should also go for the surgical option. And we have the atlanto-occipital fusion, and we have the C1 C2 fusion. And the C1 pedicle and the C2 lateral mass are the Gayles fusion and the Brooks fusion. In the Gayles fusion, we use one graft. In the Brooks fusion, we use the 2 bone graft. So these are from my sides. जी डॉक्टर तनवीर भी कुछ कहना चाहता है Almost Sumaya has covered everything. I will add one thing, that the role of CT angiography, if there is the fracture of the transverse foramen, then the vertebral artery goes from that, maybe dissection of the vertebral artery. So it's important to do the CT angiography in case there is the fracture of the transverse process. And second thing, the rule of Spence, is written in the book that it has 60% patients in which there is the disruption of the transversal ligament, but the rule we could not found with the help of rule of Spence. So we have to use the MRI, which shows the disruption of the ligament. And in MRI, there will be the hyper intense signals at the site of the disruption of the ligament. Sir, in most of the cases, we can't see the TIL so much on the MRI, that there is a hyperintensity. जी Sir, regarding the counseling of the patient, can we counsel him that he will lose plexin extension and rotation movements after surgery? Can we counsel like this, sir? yes that should be counseled बिल्कुल सही कह रहे हैं that should be done If we are going for the occipital cervical fusion, so then the moment all the moment can compromise. But in the C1 and C2, the moment is not too much compromised as in the occipital cervical fusion. anyone else who wants to discuss Sorry, sir. So, answering Dr. Shakirullah, actually, the uninjured transverse ligament is not that much visible, but when there is injury and there is collection due to the bleed, and then there is more obvious. So, the transverse ligament, when injured, is obvious on MR, and it is quite helpful when you see hyperintensity
and collection around it. कोई MRI कोई ट्रांसवर्स लिगामेंट की इंजरी नजर आती है कि नहीं हमारे इधर निकाल ठीक है निकाल जी सर, लेकिन अच्छा, हम हम देखते हैं अगर ज्यादातर इमारत पर नजर नहीं दें। इसमें यानी जो सारी चीजें कवर करी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये क्लासिफिकेशन आप लोगों को कम से कम एक 2 क्लासिफिकेशन आपको पूरी आनी चाहिए, बाकी के नाम हो ना, कोई लिवाइन और ये जो जेफरसन है वन शुड नो। इस बार मेरे ख्याल में उसमें था, आई थिंक इट वाज इन द वाइवा, फॉक्स में था इस बार, फॉक्स में था इस बार, यही पेपर में भी था, पेपर में जो मुझे याद है पेपर में भी था। ये एक मिनट देखते अगर कोई फ्रैक्चर में और उसका लिगामेंट में इंजरी, लिगामेंट इंजरी, ट्रांसवर्स लिगामेंट इंजरी एमआरआई, एक मिनट देखते अगर कोई ट्रांसवर्स लिगामेंट की इंजरी नजर आ गई। सर दूसरी इसमें एंजियोग्राम, अगर हम सर्जरी जा रहे तो फिर एंजियोग्राम जरूरी है, या ट्रांसफर प्रोसेस की फ्रैक्चर है तो फिर एंजियोग्राम। ठीक है सही। ये जो एग्जाम में हमने रखा था उसमें नजर आ रहा था, अगर आप लोगों ने वॉय में सही बताया हो ना, ये वाला है ना, ये कोई देखिए इधर से आगे नहीं, कोई और है इसमें दिखाएं पूरा, ये वाला भी अच्छा है, ये इसमें बड़ा चाहिए। मेरे ये वाला देखो, ये ऊपर वाला है ना, ये ना, ये सही है ना, ये एटलस यही बड़ा है, कौन से वाला, ये वाला हो, ये देखो ना, ये वाला भी सही है। तो इसमें ये डेंस है, दिस इज डेंस, और ये कार्ड है ना, कार्ड का एरिया है, और ये जो है ट्रांसवर्स लिगामेंट का एरिया है। आप लोग को ये चीज नजर आ रही है ना, ये जो डायग्राम है इसमें नजर आ रहा है कुछ? जी सर। तो इसमें अगर आप देख लें तो ये स्पाइनस प्रोसेस वाली एरिया है, ये जो है ना ये लेमिना का एरिया है, और ये वर्टेब्रल आर्टरी है ये, और आई थिंक ये वाली जगह है, और ये डेंस का पोर्शन है, और ये स्पाइनल कार्ड है, और ये लिगामेंट है। तो इसमें बड़ी अच्छी से एमआरआई हो, जो बड़े टेस्ला वाला हो तो शायद उसमें जरा हो, लेकिन इनडायरेक्टली भी व्हेन देयर इज मोर देन 7 मिलीमीटर स्पेस हो लेटरली, जो सबलक्सेशन हो गई हो, डिस्ट्रक्शन इनडायरेक्टली पता चले कि देयर इज फ्रैक्चर। ठीक है, ओके। So exam point of view से the important thing is that one should know about the classifications. पूछते हैं type 1, type 2, type 3, 1. Second है कि mechanism of injury. तो mechanism of injury there should be axial, vertical axial load. चाहे वो बंदा नीचे गिरे या आपके ऊपर कोई चीज गिर जाए ना, लेकिन vertical जो axial load है that will lead to fracture of the C1. अगर कोई फ्लेक्शन एक्सटेंशन है तो उसमें सबलक्सेशन या इस किस्म की चीज होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सियल लोड इज इंपॉर्टेंट। अगर आप देख लें, या तो पेशेंट ये वाले मर जाते हैं या ठीक होते हैं और कुछ सिर्फ पेन होता है, उसी पूछे तो दे हैव पेन एट द, बिल्कुल जो ऑक्सीपिटल रीजन में उनको दर्द होता है, बाकी न्यूरोलॉजिकल ठीक होते हैं। सो डिपेंड करता है प्रेजेंटेशन अपॉन द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड लोअर मेडुला, वहाँ पे क्या कंप्रेशन है कि नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो है ना, इसमें इन्वेस्टिगेशन में वन शुड गो फॉर एक्सरे, वन शुड गो फॉर एमआरआई, वन शुड गो फॉर सीटी, और आपने एंजियोग्राम जरूर करना, जैसा डॉक्टर ने बताया, वर्टेब्रल आर्टरी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एक्सरे इसलिए कर लें
कि एक तो ओपन माउथ और पूरी सर्वाइकल का एक्सरे आपको एपिलेटरल और सारी नजर आनी चाहिए। दूसरा ये है कि पर हम एक्सरे देखते हैं, सियाम इज बेसिकली शोइंग यू एक्सरेज। अगर आपके एक्सरे की ओरिएंटेशन आपने बना ली तो आपको सियाम पे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पहचानना दैट विल नॉट बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि सियाम में कुछ चीजें हैं जो कि आप जो भी करते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इस तरह जो इंटीरियर ट्यूबरकल है C1 का, तो मेन चीज है जो आपको हेल्प करती है। इस तरह आपको आर्चेस का पता हो, लेटरल मार्केशन नजर आता है, तो ये चीजें जो है ना, अगर आपने एक्सरे को डिस्कस किया हो, उसको काफी स्टडी की हो, देन द C-arm images of that particular patient will be easy for you, और वहां पे आपको कंफ्यूजन कम होनी पड़ेगी और आपको बार बार एक्सरे नहीं करने पड़ेंगे C-arm पे। 1. So MRI is must to know about ligament and to know about the spinal cord injury, and you can explain the prognosis. CT scan is must to know about the because you are going for fixation. So the bone through which you are passing a screw, you should know about that particular bone. चाहे उस screws में जा सकते हैं और कितनी लेंथ होगी और एंगल क्या बनाऊंगा। और इसमें चूंकि देयर इज इंजरी, तो नॉर्मल एनाटॉमी तो आपको नहीं होगी, तो सारे एंगल चेंज हो चुके होंगे। सो आपने वो किताबी एंगल यहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर सके, आप चीजें डिस्टर्ब हो गई होंगी, तो आपने हर पेशेंट का वो एंगल उसके सिटी की जो फाइंडिंग्स है उसके मुताबिक आप उसका एंगल बनाओगे ना, और लेंथ आपने मालूम करनी है कि स्क्रू की साइज क्या रखूंगा, स्क्रू की लेंथ और ट्रेजेक्टरी, तो सारी चीजें सीटी स्कैन कैन हेल्प यू। सो ऑलवेज व्हेन देयर इज स्पाइनल इंजरी, one should go for X-rays, one should go for MRI, one should go for CT scan, 3D। आजकल तो बड़े सारे 3D आए हैं, उसमें सब चीजें होती हैं। इसमें बेसिकली स्पाइन में अगर आप देखें तो दो चीजें हैं, whether it is stable or unstable। अनस्टेबल है उसमें सर्जरी की जरूरत, स्टेबल है नो नीड ऑफ सर्जरी, आप उसको कंजर्वेटिव मैनेज करें। जब अनस्टेबल है तो दैट नीड स्टेबलाइजेशन। और स्टेबलाइज इसमें आपको आया यहाँ पे हम ट्रैक्शन लगाए कि ना लगाए, ट्रैक्शन के नुकसान भी हैं और फायदे भी हैं। नुकसान है अगर आप बहुत ज्यादा वेट कर ले तो दैट विल लीड टू फर्दर लिगामेंटस इंजरी और ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। सो यहाँ पे ट्रैक्शन का मेन मकसद ये होता है कि स्पाइन इमोबिलाइज रहे, क्योंकि जब पेशेंट को ट्रैक्शन लगा होता है तो वो सर नहीं हिलाता। तो ट्रैक्शन इज हियर, द मेन पर्पस ऑफ द ट्रैक्शन, सर्वाइकल ट्रैक्शन इज टू गो फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ द स्पाइन। फिर आपने डिसाइड किया कि वेदर शुड आई गो फॉर दिस इज स्टेबल और अनस्टेबल। जब अनस्टेबल है, यू शुड गो फॉर सर्जरी। अगर आप देख ले, इसमें इधर दिखाएं मुझे डायग्राम दोबारा अपनी चीज का, वो प्रेजेंटेशन दिखाएं भैया, वो दोबारा शेयर करना प्रेजेंटेशन। तो स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए यू शुड गो फॉर फिक्सेशन। और फिक्सेशन के लिए स्पाइन में दो ऑप्शन है, या इंटीरियर या पोस्टीरियर, लेकिन यहाँ पे C1 के लिए इंटीरियर ऑप्शन कोई खास नहीं है। इंटीरियरली हम C1 C2 की ट्रांसआर्टिकुलर स्क्रू पास कर सकते हैं दोनों साइड पे, लेकिन वो कोई नहीं करता। तो C1 के लेवल पे द मेन ऑप्शंस आर पोस्टीरियर। अगर आप देख लें तो पोस्टीरियर में द पोस्टीरियर ऑप्शन, आवाज आप लोग आगे वाला ठीक है। द पोस्टीरियर ऑप्शन डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रिटी ऑफ द बोन ऑफ द C1। अब C1 का आपको लेटरल मास का पता होना चाहिए, C1 का आपको आर्च का पता होना चाहिए, पोस्टीरियर आर्च का, और C1 का जो फेसेट जॉइंट है C2 के साथ। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर लेटरल मास भी ठीक है और C2 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या C1 का लेटरल मास में स्क्रू पास कर ले, C2 में चाहे आप पेडिकल में कर ले, चाहे आप उसकी लेमिना में कर ले, चाहे जो भी कर ले, दैट इज ऑन यू। तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट C1 है। C2 के तो आपको कुल ऑप्शंस है जो आप करें। तो C1 में if the lateral mass is intact and there is no injury of the lateral mass, you can go for lateral mass of C1 and then that can be fused with the C2. This is one. दूसरा ये है कि अगर ये जो lateral disruption कम है या रिडक्शन हो गई है, तो उसमें आप ट्रांसआर्टिकुलर भी जा सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ट्रांसआर्टिकुलर that is not so safe if that is not reduced, तो उसमें better not to go through transarticular। तीसरा ये है कि भाई ये C1 का आर्च देखिए पोस्टीरियरली, अगर ये इंटैक्ट है तो आपके लिए आसानी है, क्योंकि इसमें आपको जिस तरह शाकिरुल्लाह ने बताया, जो गेलीज और ब्रूक्स आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, वो जरा आसान भी है और उस पर टाइम भी कम लगता है। सो इफ द C1 posterior arch is intact, you can apply other गेलीज और ब्रूक्स और इवन क्या कहते हैं जो
लेमिनर वायरिंग वगैरह कर सकते हैं। गेलिस में एक ही ग्राफ्ट बीच में होते हैं, ब्रूक्स में ब्रूक्स को ब्रेक कर लो, एक को ब्रेक कर लो दोनों साइड पे, मिड लाइन के दोनों साइड पे ग्राफ, और उसको वायर से वो कर। लेकिन उस वायर के लिए उसके लिए आपने जगह बनानी है, थोड़ा सा शेव कर ले ताकि कॉर्टेक्स कम हो और बहुत ही आसानी से फ्यूजन हो जाए ग्राफ्ट के साथ। इफ the lateral mass is not possible, if the posterior arches are broken, then you can go straightly occipital cervical fusion. तो वो occipital cervical fusion आप C2 के साथ भी कर सकते हो, C2 C3 दोनों के साथ कर सकते हैं। That is on you कि C2 कितना, उसकी जो बोन है कितना स्ट्रांग है, और आया आपको लग रहा है कि आपको C3 की जरूरत है कि नहीं है। सो इसमें ये ऑप्शंस है, lateral mass of C1 with C2 या C1 with C2 lamina, either through Brooks or through Gayleys या occipital cervical। तो ये ऑप्शन आपके पास है सारे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, वन इज द स्पाइनल कार्ड और दूसरा वर्टिब्रल आर्टरी। हाँ, तो वर्टिब्रल आर्टरी के बारे में हमें पता होना चाहिए कि इसकी इंजरी तो नहीं है। हाँ, तो इसमें वन शुड नो अबाउट दैट, उसके लिए एंजियोग्राम आपको कराना चाहिए। हाँ, हाँ, और बाकी जो है ना, जो प्रोग्नोसिस है दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर इंजरीज। और जिस तरह डॉक्टर आयाज ने बताया कि वन शुड टेल अबाउट द मूवमेंट्स कि भाई आपकी कौन कौन सी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। अगर आपने C1 C2 को आपस में लिया तो इसमें जो फ्लेक्शन एक्सटेंशन जो है ना, ये आपका वो हो जाता है, और नहीं उसमें रोटेशन अफेक्ट हो जाता है। और अगर आपने ऑक्सीपिटल सर्वाइकल फ्यूजन किया तो उसमें सारे इफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको उस पेशेंट को बताना चाहिए कि विद दिस पर्टिकुलर फिक्सेशन दीज मोमेंट्स विल बी रिस्ट्रिक्टेड। और दूसरा है कि जब भी आप फिक्सेशन कर ले तो वहां पे बोनी फ्यूजन के लिए इट इज मस्ट, क्योंकि ये आपने देखा ये जो वो है, ये जो इम्प्लांट से कभी इन्फेक्टेड हो जाते हैं, कभी उसमें ये फेल हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो बोनी फ्यूजन के लिए वहां पे जगह हो, और बोन की जो ग्राफ्टिंग है दैट शुड बी देयर। तो इसमें बस ये आपके इंडिकेशन, अनस्टेबल गो फॉर इंटरनल फिक्सेशन। इंटरनल फिक्सेशन में इंटीरियर भी पोस्टीरियर भी, लेकिन गो फॉर पोस्टीरियर। अदर C1 C2 फ्यूजन थ्रू लेटरल मास और थ्रू लेमिनी और ऑक्सीपिटल सर्वाइकल फ्यूजन। इसमें और कुछ नहीं, बस ये चीजें है। बाकी जो प्रोसीजर है वो तो अलग वो है कि कैसे करेंगे, व्हाट शुड अबाउट दैट। जी, अगर किसी कोई पूछना चाहता है या कोई क्वेश्चन है या कोई डिस्कशन करना चाहते तो शाकिरुल्लाह साहब। सर इसमें जो हम ट्रैक्शन देते हैं ना, तो हम एक टार्क देते हैं तो वो कितना फोर्स अप्लाई करते हैं? ये क्या देते हैं हम? फोर्स जो टार्क देते हैं, जो ट्रैक्शन अप्लाई की है, और हम उसको एक टार्क देते हैं, एक रूम देते हैं, घुमाते हैं। मुझे आपकी समझ नहीं आई, आई डोंट नो क्या कह रहे हैं। सर ये अक्सर टॉक्स में इस दफा नहीं से पहले पूछा था कि इसमें क्या जो हम था? यही कि जो हम एक टार्क देते हैं, जो ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, तो वो कितना फोर्स के बराबर होता है? आई डोंट नो। जी सर। सर दूसरा नहीं, पर लेवल वेट की बात कर रहे हैं। जी सर, मुझे आपकी समझ नहीं आई। अगर आप खुद बता दें, पर लेवल वेट जो है ना, वो तो मेरे ख्याल में पर लेवल 2.5 पाउंड होता है ना, हेड के लिए 5 पाउंड है। लेकिन यहाँ पे जो C1 का फ्रैक्चर है, इसमें आप ज्यादा वेट नहीं दोगे, दैट विल लीड टू फर्दर लिगामेंटस इंजरी। इसमें आप सिर्फ वही 5 पाउंड या इतना दे, हेड के लिए दे, बाकी नहीं दे दें। और जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, मुझे आपकी समझ नहीं, आप क्या चाहते हैं, तो आप शुरू करें, शायद मैं आपकी बात समझ जाऊं। ठीक है सर, बस इसको छोड़ते सर। सर एक दूसरा आप क्वेश्चन है जो आप बताइए क्या पूछ रहे थे, मुझे समझ नहीं आई आपकी बात की। वेट की बात कर रहे थे या किस चीज की बात कर रहे थे? सर वेट के ये हमसे पूछा था कि जब हम एक टार्क देते हैं, जो ट्रैक्शन हमने अप्लाई की है, और टार्क देते हैं तो कितना फोर्स के बराबर होता है? तो हम खुद भी कंफ्यूज थी। टॉर्क का मतलब क्या किस चीज का टॉर्क? मुझे समझ नहीं आया, यहाँ पे कोई बंदा नहीं समझ रहा है। अयाज, अगर आपको कोई समझ आ रहा है तो आप बताएं हमें।
मुझे तो समझ सर नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा सर। ठीक है सर, उसको क्लियर करें, फिर कल हमें बताएं, अगर जो चीज इसमें ऐड करना है तो कल हमें बता दें, ठीक है। ठीक सर, दूसरा क्वेश्चन है कि जो कॉक रॉबिन हेड होता है जो इंटीरियर एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन में होता है, हाँ तो उसके लिए हमें कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा जरूरी है? और दूसरा उसकी लिए उन्होंने लिखा है कि पहले ट्रैक्शन अप्लाई करें फिर आप सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाए। देखिए, एडीआई की बात कर रहे हैं ना? नो सर, एटलेंटो एक्सियल डिसलोकेशन की बात कर रहा हूँ। अगर वो इंटीरियर हो जाए, जिस तरह बुक में लिखा है कि कॉक रॉबिन हेड पोजीशन होती है जो 20 डिग्री लेटर टिल्ट हो जाता है टू वन साइड, 20 डिग्री रोटेशन टू दूसरी ये तरफ। वही जिसमें आपने देखा होगा कभी कभार, वेरी रेयरली, जो सर्वाइकल इंजरी अपर सर्वाइकल होता है, पेशेंट को टार्टिकुलस होता है। बच्चों में मैंने देखे 2-3 बच्चों में इस तरह। तो इसमें C1 का इसने ये बता भी दिया कि C1 का C2 के ऊपर रोटेशन होते हैं और रोटेशन के साथ थोड़ी सी सबलक्सेशन हो जाती है, तो उसकी वजह से होता है। तो उसमें भी आपने यू शुड हैव प्रॉपर MRI, और उसमें यानी देख लें कि आपको ओपन करना है कि नहीं, क्योंकि उसमें भी फिक्सेशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन उससे पहले आपको रिडक्शन करनी चाहिए, वरना वो टिल्टेड फिक्स होगा। तो उसके लिए आप ट्रैक्शन भी दे सकते हैं। जी सर। लेकिन उसकी जो मैनिपुलेशन होती है, अगर आपने परब उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो दैट इज वेरी डेंजरस। मैं बताऊं आपको, फिर वो परब मैनिपुलेशन टू रिड्यूस दैट रोटेटरी सबलक्सेशन, दैट इज वेरी डेंजरस। उसमें 2 इंजरी हो सकती है, उसमें ये वर्टेब्रल आर्टरी की भी हो सकती है और उसमें साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड की भी होती है। वन शुड बी हाईली केयरफुल। जी सर। जी। दूसरा, ये जो वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज, ये रूल ऑफ स्पेंस है, ये एडीआई की जो वैल्यूज हैं, और जो C2 के जो वो है टाइप 2 का फ्रैक्चर हेड ऑन टाइट का, ये जो वैल्यूज हैं, ये आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए कि भाई कौन सी वैल्यू है जब अनस्टेबल है। जिस तरह ये रूल ऑफ स्पेंस में 6.9 मिलीमीटर या 7 मिलीमीटर है, इस तरह एडीआई में 3 to 3.5, एडल्ट्स में, बच्चों में ज्यादा है, 4 या 4.5 तक है ना। इस तरह जो टाइप 2 फ्रैक्चर ओडोंटाइटिस में जो स्पेस है 5 to 6 मिलीमीटर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे जो CBJ पे C1 पे जो फ्रैक्चर है, इसमें अपनी वर्टेब्रल जो ट्रांसवर्स लिगामेंट का जरूर जिक्र करना है। ट्रांसफर लिगामेंट के साथ साथ जो एपिकल जो एलर लिगामेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी स्टेबिलिटी काफी, जब वो भी हो साथ और ट्रांसवर्स भी हो तो वो हाई ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये चीजें हैं। ट्रैक्शन आपने सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इमोबिलाइजेशन कर ली, ज्यादा ट्रैक्शन आप लगाएंगे तो दैट विल लीड टू फर्दर इंजरी। और आपने देखना है कि भाई आप सर्जिकल ऑप्शन कौन सा देंगे। तो ये जो मैंने बता दिया आपको, या C1 C2 का आपस में कर ले या ऑक्सीपिटल सर्वाइकल करें। तो C1 C2 का लेटरल मास पे डिपेंड करता है और पोस्टीरियर आर्च ऑफ द C1 पे डिपेंड करता है। अगर ये सारी चीजें डिस्टर्ब है, देन यू कैन गो फॉर ऑक्सीपिटल सर्वाइकल फ्यूजन, क्योंकि ऑक्सीपिटल सर्वाइकल फ्यूजन का ये नुकसान है, उसमें मूवमेंट्स की जो रिस्ट्रिक्शन है वो ज्यादा है, और उसमें इम्प्लांट भी बड़ा लगता है, और उसमें डाइसेशन भी ज्यादा करनी पड़ती है। सो द बेस्ट ऑप्शन इज C1 C2 फ्यूजन इफ दैट इज feasible in that particular patient. जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर वो अक्सर जो इनार्ट में रखते हैं उसमें एलर लिगामेंट और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का भी पूछते हैं कि वो जगह बताओ, एलर लिगामेंट किधर है और टेक्टोरियल बिल्कुल, मेम्ब्रेन ये किधर है। इस बार हमने जो रखा था, यही जो शाकिरुल्लाह साहब, शायद आपके एग्जाम में आया होगा, आपके तो नहीं आता ना। तो उसमें ये जो लिगामेंट से क्रूशिएट लिगामेंट, जो ट्रांसवर्स पोर्शन है और जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन है, सारे यही लिगामेंट्स हमने रखे थे जो CBJ का पर्टिकुलर एनाटॉमी है। तो वन शुड नो अबाउट दिस लिगामेंट्स। एपिकल बिल्कुल एपेक्स पे है ओडोंटाइट का, और एलर साइडों पे होते हैं, ऊपर अटैच होते हैं, और ट्रांसवर्स नीचे होता है। और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन क्या चीज है, बिल्कुल। तो ये जो ना, ये वन शुड नो अबाउट दिस थिंग्स। जी दैट इज बिल्कुल, एग्जाम में कंसिडरेशन ऑफ आया था ये। तो ये
क्रूशिएट इज दिस वन, टेक्टोरियल मेम्ब्रेन ऊपर गई, उसका साइडम पे ट्रांसवर्स लिगामेंट है और ऊपर एपिकल और ईयर, दैट इज क्रूशिएट फॉर्म में होता है ना। तो इनका आपको पता होना चाहिए इन चीजों का। ये बार बार बंदा भूल जाता है, अगर आपने अभी याद किया तो 2 दिन के बाद फिर आप भूल जाते हैं, तो वन शुड नो अबाउट दिस, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए। ये जरा दिखाएं कोई डायग्राम हो उसमें, लिगामेंट्स ऑफ क्रूशिएट लिगामेंट्स। एक मिनट के नजर है। जी सर, आप लोग बता रहे थे ना पता नहीं क्या लिखा ये नहीं है दूसरा। और देखो इसमें ये वाला, ये देखो ना, ये वाला आई थिंक एग्जाम में ये वाला पड़ा हुआ था। ये नहीं, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, नजर आ रहा। हाँ, तो ये जो है ना, ये वाला जो टेक्टोरियल मेम्ब्रेन की कंटिन्यूएशन है, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट है। ये जो है ना, ये वाला साइड पे ये एलर लिगामेंट्स है ये, और ये एपिकल है ये, ठीक है। तो ये वन शुड नो अबाउट दिस थिंग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये टेक्टोरियल उसने यहाँ से काटा हुआ है, इसके ऊपर आएगा। तो टेक्टोरियल इज बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्जिटूडिनल लिगामेंट, और उसके सामने ये बाकी लिगामेंट ये होते हैं ना, ये क्रूशिएट और ये सारी चीज इसके सामने होती हैं। तो यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है। अगर आप दूसरा भी दिखाओ मुझे जरा, वो अभी जो दिखाया था, अगर आप इसमें देख लीजिए, साइड से हम देख रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर लॉन्जिटूडिनल लिगामेंट है, जो कि यहाँ पे टेक्टोरियल मेम्ब्रेन बन जाता है, और जो बाकी लिगामेंट्स हैं वो इसके सामने होंगे, इंटीरियर होंगे, व्हिच आर अटैच्ड टू द C2 ओडोंटॉइड प्रोसेस। तो इसमें सिर्फ उन्होंने एपिकल दिया और बाकी ट्रांसवर्स नहीं दिए, लेकिन टेक्टोरियल मेम्ब्रेन is the continuation of posterior longitudinal ligament, and anterior to this membrane the other ligaments are there. And transverse ligament is a part of cruciate ligament. क्रूशिएट लिगामेंट तो वो है ना, यानी क्रूशिएट फॉर्म में है, तो ट्रांसवर्स इज पार्ट ऑफ दैट। जिस तरह अभी दूसरे वाले डायग्राम में देखिए, इसमें ये तरह अगर आप देखें तो ये सारा क्रूशिएट है, ये जो बिल्कुल ये इस निशान में है, तो ट्रांसवर्स इज पार्ट ऑफ दिस क्रूशिएट। सर ये ट्रांसवर्स के असेंडिंग डिसेंडिंग और ये बैंड्स होते हैं ना सर, तो ट्रांसवर्स बैंड, हाँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पार्ट्स जो होते हैं ये क्रूशिएट के साथ। ये क्रूशिएट की, क्रूशिएट मतलब जो जमा के निशान में होता है ना, जो स्लेब वाला टाइप, तो इसमें ये उसकी ये ट्रांसवर्स पोर्शन है और ये ऊपर नीचे वाला पोर्शन है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बैंड सर ये। यस बिल्कुल। और टेक्टोरियल डिफरेंट है क्रूशिएट से, इजन में रख ले। टेक्टोरियल इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्जिट्यूडिनल लिगामेंट, और ये जो क्रूशिएट लिगामेंट्स ये सारे हैं, दे आर लाइंग इंटीरियर टू द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। ठीक है जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, जज़ाक। हमारी जो सारी जो है ना, जो मीटिंग्स हैं ना, वो हमने लाइव कर दी है यूट्यूब के ऊपर भी ना, हमारा जो चैनल है, तो आप लोग जो है ना वहाँ पर जिसको बाद में अगर रिव्यू करना हो तो वहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। चलें, डायरेक्ट यूट्यूब पर देख सकते हैं ना डॉक्टर फारूक। मैंने अभी जो है ना, हमने ये किया कि हमने इसको लाइव कर दिया अभी यूट्यूब पे ना, जो भी हमारी डेली की मीटिंग सबसे होंगी तो वो हम उसको लाइव यूट्यूब पे करेंगे और उस पर रहेंगी फिर यूट्यूब पे ना, ताकि बाद में अगर किसी को देखनी हो तो वो देख सकते हैं, और शेयर भी आप कर सकते हैं हमारा। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड इसको देखना चाहता है या ज्वाइन करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल, वो है, यूट्यूब उसको का हमारा तो चैनल है ना, आपको तो पता ही डॉक्टर शाकिर, आप वो जो है ना वो उनके साथ शेयर कर दें यूट्यूब का हमारा चैनल, तो उसके ऊपर जो है ना वो सब देख सकते हैं, ओपन है सारी। लेकिन अगर कोई यूट्यूब पर ज्वाइन करे तो वो तो उसमें डिस्कशन नहीं कर सकते। सॉरी
अगर कोई यूट्यूब पर ज्वाइन करे तो इसमें डिस्कशन नहीं कर सकेगा, वो तो सिर्फ हाँ वो देखेगा। डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं